Here in the northern reaches of present-day Pakistan, where three of the world's highest mountain ranges collide, we find a land rich with history and opportunity. Through this unforgiving terrain, we find traces of the oldest trade route in history, the Silk Route, which once connected China and the East to Central Asia and the West. Along this ancient route traveled goods of all kinds, as well as ideas, traditions, language, and religion. The geography of northern Pakistan continues to represent an important link between Central Asia and the Indian subcontinent, with several high mountain passes connecting Pakistan to bordering countries such as Afghanistan, Tajikistan, and China. My parents give me name Alam Jan. I born in Chapursan Valley in Zudkhun. Now you are almost on the middle of three mountain ranges. That mountain is Hindu Kush. That's Karakoram. And then behind me is Pamirs. We are almost 30 kilometers away from Wakhan Corridor. Wakhan Corridor is located just in the middle of Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and China. There's 5 borders around us right now. Chapursan is on the Silk Route, which connected east to the west. The people was traveling with their yaks, big caravans, and they were going all through this part, from Irshad Pass or Waghjir Pass to Wakhan, and then they were going to Chitral, and then they were coming to Gilgit even. We are Wakhi people came from Wakhan, living in Pakistan, but we have our friends, our relatives behind the mountains. अफगान साइड के जो लोग हैं जो हम उनको जानते हैं, नाम से ही पहचाना जाता है। हम और उनके दरमियान हमारे रिश्ते घोड़े के हिसाब से हम लोग चाय वगैरह मतलब खर्चे लेके जाते थे उनके पास। रास्ते से फिर बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ पे फिर ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है, तो बड़ी मुश्किल से मतलब वहाँ से माल लेके वापस आना पड़ता है। यहाँ तक भी काफ़ी दिन, 1 हफ्ता 8 दिन का रास्ता बनता है। We help each other. We bring them tea and salt and sugar and all these things what they need, and then they give us butter and yak and horses and wool. All this we bring from Wakhan Corridor. Sometimes they give us maybe 10 yaks in the summers, and then the next year we give them the money back. We take care of each other. We have our relatives there. For us, it's important to meet each other, and we spend the time with each other. We should meet each other easily as before. बाकी तो खैर आगे तो हमें कोई बंद करने वाला है नहीं। अफगानिस्तान भी साइड पे भी, पामेर साइड पे भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग तो हमें कह रहे हैं कि भाई आप लोग आके हमसे कारोबार कर लो। While traditional barter traders who for centuries have crossed the border into Afghanistan by foot struggle to keep their way of life alive, the China-Pakistan Economic Corridor, crossing the Khunjarab Pass, has now become the world's highest paved border crossing and is now being called the new Silk Route. With the new and improved Karakoram Highway running through the heart of Gilgit Baltistan, CPEC will connect GB to a broader economy and bring a range of economic opportunities for local communities if the right conditions are created. CPEC हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर लोकल बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिस तरह ये सलाजीत है, जिस तरह ये जेमस्टोन है, इवन ड्राई फ्रूट है। सलाजीत जो है ये एक यूनिक हर्बल एक मेडिसिन है। एज बढ़ने से ज़्यादातर जो पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, ये मिनरल जो है जो अगर ओरिजिनल हो तो वो विद इन वीक ही वो उनको असर हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर से बाहर ले जाना यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग है। हमारे लिए ईजी अगर हो तो ये पाकिस्तान के लिए इतनी बेहतरीन बिजनेस है, बहुत डिमांड है। गिलगित बल्तिस्तान की जो प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक फूड के दें, ऑर्गेनिक फ्रूट्स के दें, जो हमारे इंडिजिनस ग्रोन चेरी है, सेब है, खुबानी है, पोटैटोज़ हैं, ये जो है हमारा स्ट्रेंथ है। गिलगित बल्तिस्तान वाले
सोने पे बैठ के भीख मांगते हैं। मतलब सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे फ्रूट्स के, हमारे जड़ी बूटियों के, हमारे कोई भी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये बॉर्डर ट्रेड पर थोड़ा सा हमें ध्यान दे कि हम अपने अच्छी चीज़ को तो कम से कम अच्छी कीमत में बेच सकें। बॉर्डर ट्रेड का जो सीपे की बातें हो रही थी जो टेलीविज़न पे, वो इस वक्त ग्रास रूट पे हम तक उसका असरात नहीं पहुंची, उसकी फ़ायदा अब तक नहीं आया है। ज़्यादातर इंपोर्ट वहाँ से हो रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, तकरीबन 0%। अगर ये निज़ाम मुकम्मल हुआ तो हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेहरे हम यहाँ से दे सकते हैं वहाँ पे चाइना को। अगर हमारे लिए ये मौका पैदा किया जाए, पैकिंग का छोटा छोटा यूनिट बना के हमें दे दे, तो हम यहाँ से बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से भी और चाइना गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि भाई इस इलाके के लिए आप हमारे लिए फ़ायदा, और लोगों को, नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए आप मौके पैदा करें। वन रोड बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है, इसको भी कामयाब करने के लिए और लोगों की तरक्की के लिए, बिज़नेस की प्रमोशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। Organic and genetically unmodified produce such as salajit, cherries, apples, apricots, and sea buckthorn are only some of the unique products of this region. When considered closely, the indigenous cultures and products of Gilgit Baltistan also represent an important value addition to the potential business landscape. मेरा नाम शमीम बानो है और मैं कारपेट वीविंग सेंटर में काम करती हूँ और मेरा ताल्लुक़ उलमीद से है। हमारे पास जो है 3 किस्म के काम हैं, कारपेट है, सुमक है और किलिम है। ख़वातीन जो है उनको ज़ाहिर है उनको भी घरों में नहीं बैठना चाहिए, सिर्फ़ एक मर्द के कमाने से कुछ नहीं होता है। जब हम मिल के काम करेंगे तो फिर घर जो है ना वो सही चल सकता है। एक ख़वातीन को भी एम्पावर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें बताते भी हैं कि हम आपके प्रोडक्ट्स ले जाएंगे, दूसरों मुल्कों में भेजेंगे या ऑनलाइन सेल करेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बाहर मुल्कों में जाएं, वहाँ पे सेल हो जाए और हमें सही प्रॉफिट मिले। तो चाइना हमारे नज़दीक है, चाइना से हम सामान तो लाते हैं यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें भी वहाँ तक जाएं, दूसरे मुल्कों में जाए, चाइना तक जाए और बिके। I request all the people who are making those policies or who are making those decisions for regarding CPEC and the future of GB to please keep women as part of your conversation. Make them part of the decision-making process. When you talk about development of GB, you can't ignore women. They are contributing equally to the development and making all the products and to the culture. So just keep them part of the process. Initiatives such as developing industry standard packing facilities, removing trade barriers, or streamlining the process for small businesses to export their goods, or working to build a world-famous brand around products from Bame Dunya, the roof of the world, are only some of the many ways to give locals access to the opportunities that CPEC will bring. चाइना भी बहुत कुछ करना चाहता है और हम भी ये जो दस्तावेज़ चाइना के साथ हमारी चीज़ चल रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हिसाब से, चाहे वो पावर क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए बिजली की पैदावार के सिलसिले में, या तालीम या सेहत या दूसरी चीज़ें तिजारत के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में दोनों मुल्क एक दूसरे को टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स के हिसाब से दैट विल प्रूव अ वेरी बेटर एंड वेरी यू कैन से एक अच्छा इसका असर लोगों तक पहुंच जाएगा। With policies focused on providing mountain peoples of Gilgit Baltistan more access to border trading opportunities, from encouraging the ancient and unique tradition of barter trade along the old Silk Route into Afghanistan, to developing modern export opportunities for small businesses along the China-Pakistan economic corridor, we could usher the locals of GB into a new era of economic opportunity, adding tangible value to a region already so rich with natural and cultural resources.